So let me give these terminologies clear, just to come up with. By the way, ये जो end पे output आएगी, let me call that output as y hat, and which is a, just सही है. और हमारा error function क्या होगा? Y hat minus actual y square. That's the error. For example, अगर ये ith example है, तो इसका कोई ना कोई label तो होगा ना? That label is yi. We need the weights so that the label we come up with and the actual label they are close together. This is something we want to minimize. For one example. For another example, उसका कोई अपना label होगा. So we want to learn the weights such that each example maps to its label. और ये हम through out नहीं करते हैं. अभी जो मैं function use कर रहा हूँ that is squared error. Make sense? I'm using squared error. यहाँ पे आप एतराज़ कर सकते हैं कि यार squared error क्यों use कर रहे हैं? Squared error पे बड़े एतराज़ आते हैं. Cross entropy क्यों use करते हैं? जो logistic regression use किया था. So cross entropy आप use कर लें, squared error use कर लें. At the end of the day, it will remain non-convex. However, cross entropy में converters थोड़ी सी fast है. Squared error is थोड़ी सी slow है. So cross entropy is recommended over the squared error. But either way it works. I mean वहाँ पे logistic regression में तो एतराज़ ये था ना कि अगर मैं squared error use करता हूँ logistic regression setting the function becomes non-convex. Here whether you use cross entropy at the end layer, whether you use squared error, the optimization remains non-convex. So having cross entropy edge over squared error is not because of convexity here in neural networks. Make sense? Logistic regression में last जो हमारे पास label आया था और जो actual label था उसका जो हमने error function बनाया था that was cross entropy. और वहाँ पे हमने कहा था squared error makes it non-convex and cross entropy was convex. यहाँ पे मैं cross entropy भी introduce कर दूँ it will remain non-convex. Make sense? So squared error की वो जो एक limitation थी कि यार ये convexity खराब कर रहा है. यहाँ पे cross entropy भी convex वो भी नहीं है. लेकिन empirically people have shown that cross entropy it converges faster than squared error. I will derive things using squared error. The same will work for another loss function. Right now I'm using squared error as a loss function. You can use any other function and the mechanism or the mechanics will stay the same. Yes, no? सर जो बाउंड्री शिफ्टिंग का की प्रॉब्लम आती थी वो यहाँ पे होगी. Boundary shifting? यानी कि अगर नॉइज आउटलायर प्रॉब्लम. Not that much. It is passing through a lot of layers that this will no longer be the case. कि outlier आगे बहुत ज़्यादा disturb कर देगा. जी. And by the way ये end पे यहाँ पे activation लगी हुई है तो जो sigmoid है या जो भी वो function है वो आपको limit करके देगा ये. This is not going very bad to very low. End पे भी एक वो लगा हुआ है. यहाँ पे G लगा हुआ है. सही है जी. Make sense? Yes, sir. Now the goal is the following. You fed x1. Here x1 is a vector. Oh, okay. Let me try this. x1 is a vector of d numbers और इसके ऊपर 1 append किया है. सही है जी? x2 is a vector of यहाँ पे 1 append किया है ऊपर. ये 1 क्यों append किया है? मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 भी as input feature ही दे दूँगा. Right? And then we have xn. Or you want to write here. This is y1, this is y2, yn. This is my training data. Again, I was using binary classification problem in the hope that once we have binary classifier, we can have multi-classifier problem. Okay. Now the idea is this is neural network. This is neural network. Okay. This is all that thing down to this. This give at the end it gives y hat. It gives y hat. When I supply it xi, it gives me y hat I, for example. Given the weights, I'm assuming weights are given. जब मैं इसको xi दूंगा, at the end of the day it will give y hat देगा. Make sense? And there are certain weights
W1 for neuron 1, W2 for neuron 2, and there are certain rates and all that stuff here. It goes through all that graph one by one, and at the end of the day, it gives me Y1 hat. Clear? Okay, now my goal is to come up with these rates such that Y hat and yi square, it is as minimum as possible. Yes? Yes. So here is the error function. Here is the error function for ith example. And this error function depends upon all the w's. All the w's. I change the w, I will get a different error. The function of errors. And this for ith example. This is the error of ith example. The error at ith example is the following. Yes? And this is the output of the neural network on input xi. This is the actual label. You want these w's so that this error is as minimum as possible on all the examples. Yes. Make sense? Yes, sir. Yes. Yeah. What about G? G को भी तो depend करेगा. No. G is yes, if you treat G as a parameter. So there are things that are called hyperparameters. Hyperparameters वो unknowns होते हैं जिनको आप somehow fix कर लेते हैं. And वो चीजें जो आप learn कर रहे थे, they are called parameters. So choice of activation function is a hyperparameter. Choice of number of layers is a hyperparameter. Choice of number of neurons in a layer is hyperparameter. There are several hyperparameters. Somehow you fix them. And then the remaining parameters are the parameters जिन पे active function जो है वो किया जाता है. Hyperparameters को tune किया जाता है, उनको learn नहीं किया जाता है. Make sense? So choice of activation function is a hyperparameter. Or in other words, somebody just told you use this activation function and you believe on and go to go and stuff like that. Okay, so that's the end goal. Now you are very familiar with error functions. You know how to minimize an error function given to you. कैसे error function को कैसे minimize करते हैं? यानी error function से मुराद क्या है? दोबारा से देखें error function से मुराद क्या है? ये मेरी कोई W space. By the way, this is error at ith example. The overall error or the average error Sigma. is actually 1 over n sum of all the errors. This is the overall error. I mean, this is the average over all examples. Make sense? And this error, at the end of the day, is a real number. It's a real number. Make sense? It's a positive, non-negative real number. ये है क्या? दोबारा से मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़. अगर मैं वेट स्पेस को देखूँ, अगर मैं W's को देखूँ, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 and so on. ये जितने भी मेरे W's हैं, अगर मैं हर W को एक एक्सेस ट्रीट करूँ, so this is extremely high dimensional space, the W space. Make sense? And this E is a function of the points of this space. यानी मैं कोई एक पॉइंट यहाँ से उठा लूँ, वो एक पॉइंट क्या होगा? W1 की वैल्यू ये हो, W2 की वैल्यू ये हो, W3 की वैल्यू ये हो, W4 की वैल्यू. That's one point in the W space. Yes? और वो पॉइंट अगर मैं इस फंक्शन में रे पास कर दूँ, तो एक रिजल्ट आएगा, लेट्स से 59. वो एक जवाब है. Make sense? अच्छा सर. अब अगर मैं कोई फर्क पॉइंट चूज करूँ, यानी कोई फर्क पैरामीटर्स की वैल्यू चूज करूँ, तो ये वैल्यू फर्क आएगी. हाँ सर. Yes? Assume करें मेन कि अगर मेरे पास सिर्फ दो W's होते हैं, W1 and W2, just two. अच्छा. And I have an error that depends upon W1 and W2 space. Then for each choice of W1 and W2, for each point in the W space, I have a height that represents the output of the error function. Yes. And if I see all these heights for all the possibilities, this becomes a surface. Yes. Yes? And that is called an error surface. And so for example, I can just pick this thing and see from here, so the error function might go like this, there and there, everywhere in this space. Because at every pair, W1, W2, I have a height. Yes? Okay. Now I want
W1, W2 for which the height is minimum, because this height really is the error or the loss. People is लोग इसको loss भी कहते हैं, error भी कहते हैं. So here I want, so what W1 and W2 will give me the smallest height. That W1, W2 जो मुझे smallest height देंगे, that smallest height is called global minimum Yes, sir. of the error surface. समझ आ रही? Yes, sir. और वो W1 and W2 जो मुझे हाइट स्मॉलेस्ट दें इन अ नियर बाय नेबरहुड, यानी अगर मैं थोड़ा सा नेबरहुड में देखूं, then this W1 and W2 give me the smallest over a neighborhood, not overall. Then that smallest height is called local minimum. Make sense? If the function is convex, a local minimum indeed is a global minimum. So no matter where you start, you keep on moving towards local minimum. At the end of the day, when you achieve local minimum, that is global minimum if the function was convex. Yes, sir. This is not the case if the function is non-convex. If the function is non-convex, from where you start, by applying a particular update every time you move, you will be moving downwards to on the error surface, and then you will stop somewhere which is smallest in the neighborhood. But that will be local minimum. Make sense? Yes, sir. And we cannot say this is the best because the function was not convex. Yes, sir. This is the problem in neural networks. This function is not convex. And you come up with another cost function other than a squared error, it will remain non-convex. So this is almost hopeless to come up with an algorithm that finds W1, W2, all the parameters that gives the minimum. It is good to find out W1, W2 that give a better minimum. So from where you start, you keep on moving, and wherever the local minimum is found, check the accuracy. If that is acceptable, stop there. If that is not acceptable, then start from different random initializations. Because the achievement of local minimum depends upon from where you start. Yes. So you start from some W. For example, आपको किसी ने कहा यार कि आप किसी ने एरर सरफेस कहा कि यार एरर सरफेस में मिनिमम निकालो, और लेट्स से आपके पास ये फंक्शन मौजूद है कि अगर आपके पास W हो तो आप एरर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्ज करें आपके पास ये फंक्शन है कि आप W प्लग इन करें, आपको एरर का नंबर आ जाएगा 35. समझ आई? तो फर्ज करें आपको कोई कहता है यार इस W पे मुझे एरर बताना, आप वो फंक्शन पे W डालते हैं, एरर आ जाता है 40. और एक और बंदा कहता है यार इस W पे बताना, आप निकालते हैं उसके आता है 15, तो आप कहते हैं यार ये 15 40 से बेहतर है. मेक सेंस? अब सारे पॉसिबल W's पे तो आप ट्राई नहीं कर सकते. So you start with some W randomly, you put that W in the error function. Yes, a number will come up, that is the error. You see that error is, let's say, very big. Now, from there, should you use haphazardly some other point and compute error there, or should you use some other point haphazardly and compute error there and find out the minimum? No. That problem will be completely hard and very, very hard in a very high dimensional space. You cannot exhaust all the points. The thing that is good is if you know the amount of error at a particular point W, then you have a direction in which if you move and then pick a W, the new error will be smaller than the previous one. And that error is that direction is the direction of the gradient. ये हमने किसी लेक्चर में प्रूव किया था, if you remember. कि अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं और वहाँ पे एरर की कोई वैल्यू है, वो कौन सी डायरेक्शन है कि उस डायरेक्शन में अगर मैं कोई स्टेप लूँ और उस स्टेप लेने के बाद अगर मैं नए W पे पहुँचूँगा, उस नए W पे एरर की वैल्यू क्या आएगी? That will be smaller than the error value previously. और इवेंचुअली अगर मैं हर पॉइंट पे ग्रेडियंट कंप्यूट करके हर पॉइंट पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन फर्क आ सकती है. ग्रेडियंट इज अ वेक्टर, इट हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. सो अगर हर पॉइंट पे मैं ग्रेडियंट कंप्यूट करता हूँ, ग्रेडियंट की कोई डायरेक्शन होगी, अगर उस डायरेक्शन में मैं स्टेप लूँ और तो जब नई जगह पे जब मैं जाऊँगा फॉर श्योर वो उसका एरर प्रीवियस से बेहतर होगा, थोड़ा होगा. अब नई जगह पे जब मैं ग्रेडियंट कंप्यूट करता हूँ तो इसकी अपनी डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के लिहाज से. So every time I compute the gradient will guide me where to go, and you will achieve better than the previous one. You will not be able to achieve better overall, better than the previous one. And eventually the gradient descent,
keep on walking in the direction of the negative gradient. Keep on moving that until you achieve at a point where you cannot further reduce the error, and that's the local minimum. Make sense? To apply, अब देखें मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, उस पॉइंट पे मेरे पास एरर की कोई वैल्यू है, उस पॉइंट से मुझे ये गाइडेंस हासिल हो जाए कि अगली डायरेक्शन क्या होगी, अगला कौन सा W होगा जो इससे बेहतर है. That's a big achievement मैं आपको बताऊँ. This is a big achievement as compared to कि एक पॉइंट पे मेरे पास एरर की वैल्यू है या मुझे पता नहीं है दूसरा पॉइंट कौन सा होगा. And because of this guidance, we need this function g to be differentiable. Because we want to apply the gradient descent. This is the direction of the gradient that guides you to move in this direction. You will find a better one. But the gradient direction will be found after you have computed the gradients, and you will be able to compute the gradients when the function is differentiable. So the first property of this function g, whatever function g you come up with, that's okay as long as it is differentiable. Make sense? Why differentiable? मैंने अभी बताया. You need a guidance to start from somewhere. You need a guidance to move towards the local minimum. Why not global minimum? You cannot achieve local minimum or global minimum. Even if you have achieved, you do not know whether it is global or not. Make sense? So far, so good? Yes, sir. So the idea is the following. We have error function. We will differentiate this error function on W. For that, we must have some W where we have evaluated the error. So let's start by initializing these W's randomly from somewhere. Make sense? Initialize these all the W's randomly, supply one point to it, and at the end of the day, you can compute for that point, you can compute the amount of the error. Make sense? For that W, this is the error. Is there a better W? Apply take the gradient of take the derivative of the error function with respect to W, update. Remember the update? The update was the following. W new is equal to W old minus alpha times the derivative of error function with respect to W. That's the gradient. This is the learning rate. The learning rate tells you how much step you are allowed to go. Learning rate. Make sense? मैं ये चीजें रिवाइज कर रहा हूँ. उसकी वजह ये कि gradient descent हमने पहले logistic regression में देखा था, लेकिन यहाँ पे यूज ही ये होना है. So I want कि इसकी bits and bytes आपको पता हो. Yes. और अगर नहीं पता हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. This is important, very very important. Clear? In a nutshell, in a big picture, we have to start from some W, let me call it W old. At that W old, we have some gradient direction that is specified by the vector dE by dW. We will see how to compute that gradient. But given the gradient direction, how much in the negative gradient we have to take the step. और ये मैंने लेक्चर में एक में प्रूव किया था कि नेगेटिव ग्रेडियंट पे अगर आप मूव करेंगे, you are moving towards the local minimum. That is the direction of the fastest decrease. Okay. So you move in the negative direction of the gradient. That is the direction in the fastest decrease of the function. How much step you have to take in that direction? That is determined by alpha, and alpha is again a hyperparameter. This is called learning rate. If you take this alpha value very big, you're taking steps and you may overkill. And if you take the alpha to be very very small, you may end up reaching the local minimum very slow. So having this alpha parameter tuned very well is very very important to converge to the local minimum very fast. Why had to expand करते हैं? At the end of the day, ये y है, ये जो y है ये w's पे डिपेंड करता है. Otherwise मैं इसको w का फंक्शन कह नहीं सकता. This y hat is actually the function of w, and error is the function of y and s. Make sense? ये y hat को भी expand करते हैं, ये सारे w's पे आएंगे. बिल्कुल w पे होएंगे. Yes, no. Yes, sir. Clear it? So I'm calling this as error. This thing y hat obviously depends upon w's and layer wise w's and stuff like that. You will see how to differentiate this. लेकिन अब तक ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. एरर फंक्शन का w के लिहाज से डेरिवेटिव हम लेंगे तो हम नया स्टेप ले सकते हैं टुवर्ड्स द लोकल मिनिमम.
मेक सेंस? अब क्वेश्चन ये है कि एरर फंक्शन का दुनिया जहां के हर w के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं कर सकते। याद रखें, you have to differentiate this with respect to this w. You have to differentiate the same thing with respect to this w. You have to differentiate the same thing with respect to this w, जो w यहाँ पे है। There are a lot of w's there. For every neuron there are several w's. For each w you want derivative. To update every w, to update a w, you need derivative with respect to that w, and you want to update every w. Make sense? Yes, no? Yes. So far so good? सर एक क्वेश्चन Yes. सर हम देखें कि ई इंडिविजुअल न्यूरॉन जो है Yes. वो एक लीनियर रिलेशन का एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम Logistic regression by applying G as a sigmoid. नहीं सर उसकी आउटपुट के ऊपर तो हमने खाली जी एन पे भी तो लगा बिल्कुल एंड पे, तो बिल्कुल एंड तक ये लीनियर रिग्रेशन होगी and you will end up having one logistic regression model. You need non-linearity of a neuron to allow that neuron to learn something different. Otherwise, the multiple neurons they will collapse together and that will end up one neuron at the end of the day. क्योंकि ये इस तरह से नहीं है कि जो एक इंडिविजुअल न्यूरॉन है ये है एक्चुअली लीनियर रिलेशन लेकिन एंड पे जी जी जो भी है सम काइंड ऑफ थ्रेशोल्डिंग जो कि उसे उसके आउटपुट को चेंज करे नहीं, जैसा सेम क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन असल में लीनियर रिग्रेशन में है, एंड पे आपने जी लगाया, असल में ये आप एंड पे जी नहीं लगाते, ये आप लर्निंग के दौरान जी को डिप्लॉय कर चुके होते हैं और जो डब्ल्यू लर्न करते हैं वो जी के लिहाज से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डब्ल्यू लर्न कर लेते हो और बाद में एंड पे जी लगाते हैं। While learning you have considered G inside and W is learned accordingly. So that makes it drastically different from linear regression. G so far so good? Yes sir Yes. हम W हर न्यूरॉन के लिए अलग-अलग से एक करके लर्न करेंगे, आप सारे एक लर्न कर लेंगे, उसके बाद एक सारे W वाला चलेंगे। देखिए, this is yes. Let me explain this. This is called a forward pass. This is called a forward pass. Once you have W's for each layer, you can have a forward pass and this X get maps to Y hat. Yes? To get a better Y hat, you need the forward pass again. And to have the forward pass again, you have a lot of these W's, I mean all these W's are updated. जिन्हों में अपडेट नहीं होना उनके लिहाज से ग्रेडियंट खुद ही जीरो आ जाएगा। अच्छा सही है ना? वो वाले W's जिनको अपडेट नहीं होना चाहिए उनके लिहाज से जो ग्रेडियंट की वैल्यूज है वो खुद ही जीरो आएंगी, बिकॉज ग्रेडियंट गारंटीज टू गिव यू लोकल मिनिमम बेटर देन द प्रीवियस वन। सो आप x को पकड़ते हैं, आप एक फॉरवर्ड पास से y बनाते हैं, देन आपको लगता है दिस y इज नॉट गुड। वो y गुड क्यों नहीं था? w सही नहीं थे, अब नए w लेके आने, कौन से? सारे। अच्छा नहीं, ये तो चेंज नहीं होने चाहिए, ये तो अच्छे हैं, ग्रेडियंट विल टेक केयर ऑफ दैट, उनके लिहाज से डेरिवेटिव जीरो होगा। मेक सेंस? यस नो? यस सर Yes. So the question is, हर लेयर पर W की डायमेंशन चेंज होगी? Yes. Actually अगर आप हर लेयर को देखें ना, इस लेयर को जो इनपुट डायमेंशन मिल रही है वो D है, D+1। तो इस लेयर को मिल रही है वो प्रीवियस न्यूरॉन +1 है। yes So अगर आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इस लेयर पे D से ज्यादा हो, तो actually the dimension is increasing. बीच में अगर न्यूरॉन्स कम है किसी लेयर में, तो dimension is decreasing. It is automatically expanding and shrinking and stuff like that. I mean, it is so flexible. आप ये D आपके पास input features हैं, D+1 having a bias as well. You have like say 2D neurons at the first layer. जब ये आप यहाँ पे बाहर आएंगे, ये जो सारे values हैं A, they are features for the second layer. Yes. Now your features are from D+1 to 2D+1. So actual dimensionality has increased. बीच में कहीं पे जाके shrink भी होगी, increase भी होगी। Shrink कब करनी है, increase कब करनी है, that's a hyperparameter. कितनी layers होनी चाहिए, हर layer में कितने neurons होने चाहिए, that's a hyperparameter. But the neural network is flexible.
It is doing dimensionality reduction, increasing for you inside. Next question. तो ये जो features आ गए हैं, They are features for the second layer. confidence भी हो, Yes, they are confidences, but they are real numbers at the end of the day, and they are acting as features for this layer. If this layer is not there, that is these are the input features for this. Yes. और neural network करता क्या है ये, यानी it generates features, then it generates features of features, then it generates features of features of features, and so on. So this is actually last week में हम देखेंगे convex convolutional neural networks. उन लोगों ने तो ये भी देख लिया है कि अगर आप images पे neural networks apply करें, तो जो first layer होती है that actually captures high level features like edges and corners. Second feature actually features of feature, edges से मिलके क्या बन सकता है, वो वाले features जो हैं वो second layer पे होते हैं. Third layer पे उनसे मिलके क्या बनता है और आखिरी layer पे faces बन रहे होते हैं. So the first layers they actually capture features that are high level of generic. The last layers or the very end layers they actually capture features that are specific to the object. For example, if you want face recognition or face detection, they actually represent edges से मिलके बड़े features बनेंगे, उनसे मिलके बड़े features eventually face बनेगा. And they are इधर ये कैसे पता लगा कि number of the neurons are then start which are there is no guideline for this. There is this is how the practice. क्या ये पता लगता है कि इस layer के पास कितने feature expression और reports की हुई है? जितने न्यूरॉन आपने सेट किए हैं उतने फीचर. सो फॉर एग्जांपल D से 4 पे आते हैं. जितने न्यूरॉन हैं आपके उतनी रिडक्शन या एक्सपेंशन हो चुकी है. हर न्यूरॉन क्या कर रहा है एग्जैक्टली दिस इज अनएक्सप्लेनेबल टिल टुडे. नहीं दिस इज अनएक्सप्लेनेबल. अगर आप कहेंगे लेमन टर्म्स में इंग्लिश का एक सेंटेंस बोले और बताएं ये न्यूरॉन ये कर रहा है, ये न्यूरॉन लिहाजा ये फीचर इस पे y पे मैप हो रहा है, दिस इज अनएक्सप्लेनेबल. Till today, maybe it is explained in future, but till today we don't have any explanation. So far so good? Yes, sir. Great. So I'm going to erase this code and I'm moving towards the derivatives, the core of this. Yes? Yes, sir. Remember, we have to differentiate error. By the way, we will be applying stochastic gradient, so we will be differentiating error for each example individually. Okay? And the reason मैं बाद में बताऊंगा due to efficiency reasons. फिलहाल मैं सिर्फ ये assume करूंगा कि मेरे पास एक example है, उससे लिहाज से भी error है और उससे एक example के लिहाज से मैंने W update करा. सही है? Then we will see कि अगर multiple example हो या पूरे data में हो तो how to actually combine that, how to actually use that algorithm that works for one example and that will work for all examples. Make sense? Yes. Okay. Just a piece of notation. मैं कुछ notations describe करने जा रहा हूँ. Just for simplicity. मैं बिल्कुल एक तो बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क है, मैं उस न्यूरल नेटवर्क का बीच का एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको लेके दिखाने लगा हूँ. So a subsection of a neural network. सही? The subsection is the following. This is Z, J, L minus 1. What this means is this is the jth neuron of L minus first layer. Okay, so there are, let's say, total 10 layers. So at L minus 1 layer, there are neuron 1, 2, 3, 4. This is the jth neuron of L minus 1 layer. Okay, and this is the kth neuron of L layer. So let me explicitly say that this is the jth neuron of L minus 1 layer. Let me explicitly again say this is the kth neuron of L layer. Make sense? This is inside of the neural network. Obviously, there are several edges coming in. And there are several edges going out. To all of these, one edge is going there. And then there are, obviously, इसके अपने भी कई और भी edges आ रहे हैं. And then there is one edge that is going to come out and stuff like that.
Clear? ठीक है. Yes? Okay. I'm assuming that लास्ट लेयर पे तो एक आउटपुट नहीं होनी चाहिए. लास्ट लेयर पे एक आउटपुट होनी चाहिए. हेल्थ लेयर पे. ये इंटरमीडिएट लेवल ना. but this is not last layer. This is not last layer. This is not. This L level. This is layer L. This is layer L and this is kth neuron of it. Clear? तो उसको तो बेसिक का करना लेयर नहीं होती है लास्ट वाला पॉइंट. मैं भी लास्ट पे गया नहीं बेसिक वो लेयर होती है. वो लेयर होती है वो लेयर होती है that is output layer. टेक्निकली उसको लेयर है. एक न्यूरॉन से एक आउटपुट आती है लेकिन वो आउटपुट आपके सबसीक्वेंट लेयर के हर न्यूरॉन को देनी होती है. Yes. एक न्यूरॉन से एक आउटपुट आती है एक ही लेकिन the same output is given to every neuron in the next layer. Yes. Yes. So this is the same as this. This is the same as this. एक न्यूरॉन से एक ही आउटपुट आती है एक ही. It is given to every neuron in the next layer, a copy of it. Yes? Yes, sir. Now this image should make a partial sense to you. Yes? Yes. Yes, sir. So let me try to make more sense. This is the output. This is the output of ith neuron of the previous layer. Yes. अब सही है? हाँ सही. प्रीवियस लेयर पे कोई ith न्यूरॉन था, ith न्यूरॉन, उसकी आउटपुट ये है. सो लेयर L-2 का ith न्यूरॉन, उसकी आउटपुट ये है. चूंकि वो आउटपुट हर सबसीक्वेंट न्यूरॉन को जानी है तो मुझे यहाँ पे J लिखने की जरूरत नहीं है. This output has to go to every neuron. All I have to specify कि ये आउटपुट किस न्यूरॉन से आ रही है. बिल्कुल. It is coming from ith neuron. सही है? और ये एक रियल नंबर है. ये एक रियल नंबर है. इसके साथ जो वेट मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ जो वेट मल्टीप्लाई होना है, that is the following. That's it. यानी मैं इसके साथ ये वेट मल्टीप्लाई करूंगा और GF का फिर इसके साथ इसका अपना वेट, फिर इस एज के साथ इसका अपना वेट, ये सारी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये एक वैल्यू बनेगी. इस एक वैल्यू पे G अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी. ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे और भी चीजें आएंगी. इसका अपना वेट होगा WJK of L. और भी एजेस होंगे, इसमें और भी वेट्स आ रहे हैं, वो भी सारे होंगे. इसमें मल्टीप्लाई इससे जो चीज निकलेगी दैट विल बी AK. Yes, no. Yes. Digest this diagram and then we will move towards computing the details. This Wij L-1 is the following thing. I means the previous neuron is I, J means the next neuron is J, and layer L-1, this is the weight of this layer and this layer. This is one of the weights. There are several weights here. This is one of the weights. Another weight is associated. For each edge, there is a weight associated. For this particular edge, this weight is associated. Yes. Make sense? Yes, no. Yes. Clear, Eddie? Yes. So far, so good? सर ए आई नेक्स्ट में ए जे पे ए के ये आई जे पूरा समझ नहीं आ रहा. सॉरी. ये दोबारा से देखें. This is a jth neuron. This is a kth neuron. This is jth neuron of layer L-1. Whatever it will produce at the end of the day, that is the output of jth neuron of layer L-1. That output is this.
This output is fed to every neuron in the next layer. Yes, sir. One feeding is to this neuron. Yes. So this neuron will take output of this neuron Yes, sir. as well as outputs of several other neurons of this layer. Yes, sir. Yes? Yes, sir. So this output is AJ of L21. Associated weight is this. See? Eventually all these products will produce this. This is kth neuron of L layer. And its output is the kth neuron produces this output of L. So each neuron produces one output. Is that okay or? Yes. Yes, come on. Okay, great. I am going to erase this board because I have to see this figure again and again, so I want to keep that figure clean. Yes? अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है कि ये L-2 है, L-1 है, just this is a notation मैं आपको थोड़ा सा सीधे explain कर देता हूँ। या ये सुने मेरे पास, जो बिल्कुल पहली लेयर, जो बिल्कुल इनपुट होती है, जिसको आप इनपुट लेयर वो लेयर काउंट में लेयर से शुरू नहीं होती। I mean the first layer is where the first neuron occurs. उससे पिछली लेयर को हम zeroth लेयर कहते हैं, zeroth लेयर, ठीक है? और जो इनपुट हो A01 है, that is our 1. A0th layer का जो 2 है, that is our x1. ये इसको भी 0 ही कर दें। हाँ ये सही सही है? So this is the input to the very first neuron. हाँ A0, अगर मैं इस पूरे वेक्टर को कह दूं A0, ये पूरा वेक्टर, this will be multiplied by weight of the first layer and then it will produce 0. Just to be consistent that this is 1 minus than that. Make sense? This number is 1 minus than this number. Just to be consistent. Make sense? Yes, no? Okay. Okay, let's test your tables. लेकिन यहाँ पे हम न्यू रोल स्पेसिफाई करेंगे ये जो सीखा है किस न्यू रोल से है मैं ये पहला न्यूरॉन ले रहा हूँ, फर्स्ट न्यूरॉन let's say this is just मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले नंबर है, they are one difference. W और A they have one difference. क्योंकि जो लेयर पहली स्टार्ट होगी वहाँ पे W आएगा, उससे पहले A0 बड़ा होगा, जो दूसरी लेयर होगी उससे पहले A1 आ रहा होगा। सही? Okay. df by dx is equal to d y by dx then GF per dy df by dx dy by dx by dy by अब dy है dy by dx dx ठीक है? This is called chain rule. इतना ही जानना काफी है। That's okay. If you know this, it's perfectly okay. सिर्फ एक चीज और टेक्निकल चीज ये ध्यान रखिएगा, these are not the numbers जो कि cancel out हो जाते हैं। These are not. This is one number. This is one number. It happens their multiplication equals. These are not the separate numbers that are cancelled out. But ये याद रखने से ना ये चेन रूल का फॉर्मूला याद नहीं रहता। अगर आप कैंसलेशन स्टोरी याद रखें ना, you will be able to extend this chain rule wherever you want. मैं इसको लंबा कर सकते हैं। लेकिन ये आपने कतई तौर पे ये ज़हन रखना है कि actually cancel हो गए। अब सो इसको दो लफ्ज़ों में आप actually ये cancel नहीं होता, practically cancel। You can have this kind of सही है। Okay. Okay, great. Clear है?
That is not very difficult, but it is important to understand. It is not very difficult. It's a simple kind of algorithm. Remember, we have to differentiate the error with respect to every weight, update that weight. Make sense? Yes. To update a particular weight, we need the derivative of the error with respect to that weight. And then we are able to update that particular weight. So we want the derivative with respect to all the weights. And we want that derivative of the error, not something in between. For example, we want to differentiate the error with respect to a particular weight. We want to differentiate the error with respect to another weight. We are not going to differentiate something in between with respect to the weight. The last error will be differentiated with respect to every weight. Make sense? Because this is the error we want to minimize. This is not something in between that we want to minimize or maximize. This is the error we want to minimize. Yes. Make sense? Okay. Partial EI. By I mean this is the ith example. This is the error on ith example. Okay? Partial EI. By partial because there are several variables. I cannot use technically the word D. So partial this by partial Wij of L minus 1. To update this weight, I need the derivative of this with respect to this weight. ऐसे ही है ना? Yes. अगर इस ये जो पर्टिकुलर वेट है, इस पर्टिकुलर वेट को अपडेट करने के लिए मुझे एरर का डेरिवेटिव चाहिए इसके लिहाज से, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक। यस नो। और ये मैं जेनेरिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लिख रहा कि ये एक दूसरे के लिए अलग ड्राइव करना पड़ेगा। Once we have the formula, we can even be able to derive these for everything. Yes? Okay, this is equal to what? By the way, error यहाँ पे कहीं पे बैठा है। पांच में। ये मूव करने के लिए पूरी यहाँ पे दुनिया है पूरी, उसके बाद एरर यहाँ पे। सही है जी? जी। Error with respect to this thing is what? Yes, no. So error of this with respect to this is, so derivative of that with respect to that is derivative of this with respect to that, and then derivative of that with respect to this. This way. अच्छा। Yes, no. Nice. W a real number. W a real number now. It is from the ith node of the previous layer to the jth node of the next layer, and that's one number. अभी मैं vectorized बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं vectorized implementation से दिखाऊंगा, लेकिन for now I'm working for each real number. This V is real number, this W is real number, A is real number, everything is real number. E is real. No vectorized implementations, nothing for now. Yes, no. Is this okay? Oh, by the way, this is okay by the cancellation rule as well. So it has to be okay. ठीक है? So derivative of this असल में ये ऐसे है. How W impacts E is how W impacts Z, And and Z then how impacts- Z impacts D. Yes. Transitivity. Yes. This is exactly what the chain rule is. इसकी इसपे चेंज उसको कैसे इफेक्ट करती है, दैट इज कि इसकी चेंज इसको कैसे इफेक्ट करती है, और इसकी चेंज उसको कैसे इफेक्ट करती है. Yes. I mean, it will be, I mean, मेरे ख्याल में तो ऐसे ये इससे करेगी फिर ये इसको करेगी. हाँ नहीं, इन बिटवीन तो बहुत कुछ है. अच्छा. वो तो यहाँ से आज यहाँ पे भी है. बिल्कुल यहाँ पर. फिलहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अंदर बहुत कुछ है. मैं इधर से इधर जंप करके गया हूँ, तो हो सकता है इधर से इधर आऊँ, इधर से इधर जाऊँ. But I want to come up with a formula that jumps automatically. Actually, it will be recursive. You'll see now. It is completely recursive. Just come up with an expression, and things will become recursive. Okay. So far so good. Yes. जरा और से देखिएगा. ये जो नंबर है ये जो नंबर है ये तो आप मुझे बता सकते हैं. This is A I L minus 2.
as derivative of the dot product with respect to this? Yes, no? Yes, sir. Yes. Is that okay? No, no, no. दोबारा से देखिए ये zj क्या है? This times that Yes. plus this times that plus this times that and so on. अच्छा इस सारे सम का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इस वेट के अलावा बाकी सारे वेट्स ही हो जाएंगे। बैकवर्ड सम में सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। और इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसके लिए आप ये रह जाएगा। ठीक है Make sense? Yes, no? Yes. And I am calling, I'm just renaming this thing as delta J of layer L minus 1, where the definition of delta is the following. Delta J of layer L minus 1 is just defined like this. It is just a redefinition. I'm just taking another notation. Rather than writing as a fraction, I'm writing this symbol for now. This is by parcel Z L minus 1 of J. Clear? I'm just writing this thing. So far so good? And this, so let me